warm welcome to all friends who have switched on to watch today's episode of Youth Folio. As the mercury is dipping, many fairs, festivals and cultural events are bringing in warmth and spreading joys in the region. We shall show you glimpses of some of them, besides other interesting stories in our episode today. Sit tight and enjoy. Minister of State for Home Affairs Shri Kiran Rijiju inaugurates cargo complex at Akhaura, Tripura along Indo-Bangla border. Bus service starts between Guwahati and Dhaka. Tripura starts cash transfers in lieu of subsidies given on public distribution system. Bardhaman bomb blast accused arrested in Assam. Shilpotsav fair held in Delhi Haat to promote disabled artisans. World AIDS Day sees massive awareness campaigns for AIDS prevention. Zone Agas hold freshers meet in Delhi. Union Minister of State for Home Affairs Shri Kiran Rijiju flew down to Tripura on the 6th of December to inaugurate a state-of-the-art cargo complex at the integrated checkpost at Akhaura along the Bangladesh border. He was received by Tripura's Minister of Health, PWD and Revenue Shri Badal Chaudhary, Member of Parliament Shri Jitendra Chaudhary and a host of dignitaries who showed him around the glitzy complex with modern facilities before moving on to light the ceremonial lamp on stage. The young Minister of State for Home roundly praised the beautiful complex and said that it would be a catalyst for changing lives in the state as it would lead to regulated trade and human movement between India and Bangladesh. The state leaders also impressed on the same points. North East के अन्य भागों का भी इसका लाभ मिलेगा और इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के माध्यम से आपका जिंदगी में बदलाव आएगा। हम कभी भी नहीं चाहता कि जो पड़ोसी देश है उससे हमारा इलीगल रिलेशन नहीं होना चाहिए, लीगल रिलेशन होना चाहिए। यहाँ कभी स्मगलिंग होता है बोलते हैं, कभी इलीगल माइग्रेंट्स का आना जाना होता है, कभी टेंशन होता है। ये क्योंकि हमारा बॉर्डर में ठीक से हमने रेगुलेशन नहीं किया। देयर इज नो प्रॉपर रेगुलेटेड अलोंग द बॉर्डर इन टर्म्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इसको हम सिस्टमेटिक वे में एक फॉर्मलाइज करके इस तरह का इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बना करके यहाँ पे सारे लोग आएंगे। यहाँ पे आपका कस्टम से लेकर के इमिग्रेशन से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से लेते हुए हमारा सेंट्रल वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का भी ऑफिशियल्स आए। सारा जो है एक ये बिल्डिंग इस कॉम्प्लेक्स में सब लोग बैठने वाले हैं और इससे जो रेगुलेटेड ट्रेड एंड कॉमर्स हमारा बांग्लादेश का साथ जो संबंध होगा ये आपका जिंदगी में बदलाव इसी से तो आएगा। These facilities today which have been inaugurated, I believe this will not help promote the trade, export and import between Bangladesh and India. Simultaneously, it will enhance the more better relation between two countries, Bangladesh and India. Further, Shri Kiran Rijiju also took the opportunity to once again urge insurgents still in the jungles to return to the mainstream. विकास का संभव तभी है जब शांति होगा। हम सरकार में आने के साथ साथ मैंने सारे नॉर्थ ईस्ट के जितने भी जो कुछ लोग भटक गए हैं, कुछ लोग आर्म्स उठा करके मुख्य धारा से बाहर गए हैं, उनको मैंने अपील किया था कि हम नया सरकार आया है, नया विचार के साथ, नया पॉलिसी के साथ आप मुख्य धारा में जोड़िए। भारत एक विशाल देश है, हम सब प्राउड है, वी आर प्राउड इंडियन, वी आर लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड। और इस देश का मुख्य धारा में जोड़ने से आप यू विल बी प्राउड इंडियन, यू विल बी प्राउड एज ए इंडियन। और ऐसा देश, ऐसा अच्छा खुशहाली, ऐसा एक डेमोक्रेटिक देश में सिटीजन होने का गौरव महसूस करना चाहिए और ये तभी संभव है जब आप मुख्य धारा में जोड़ेंगे। One can soon start having breakfast in Guwahati
lunch in Sylhet and dinner in Dhaka. The third route connecting India and Bangladesh opened on the 10th of December with a trial bus run amid much cheers and happiness from the interstate bus terminus of Guwahati. A grand flag-off ceremony was held wherein dignitaries from both India and Bangladesh expressed their happiness and expectations from this new service. A 32-seater high-tech luxury air-conditioned bus has been pressed into service. For the trial run, the bus carried a joint delegation of officials from India and 8 officials from Bangladesh. The bus would first cover a 196-kilometer stretch on the Indian side from Guwahati to Shillong to Dauki on the Meghalaya-Bangladesh border. From Dauki, the delegation would be transshipped to a bus service of Bangladesh to take them on a 300-kilometer journey to Dhaka via Sylhet. It is expected that the entire journey would take 17 hours and would cost around Rs 1,000 per passenger per trip. However, officials said that the exact details of number of hours, stoppages, checkpoints, etc. would be worked out after the trial run. It's a historic day because the historical ties that lies between the Indian-Bangladesh relation would be strengthened further once this Dhaka to Guwahati bus service gets on the way. So on behalf of Bangladesh and the people of Bangladesh, also on behalf of the government of Bangladesh, we would extend our heartiest gratitude to the government of here, and I hope it would be a successful journey over the years once the bus service gets into operation. Chief Minister of Tripura, Shri Manik Sarkar, presided over a one-day-long program of cash transfer into bank accounts of consumer card holders in lieu of subsidies offered to people for mustard oil and pulses under PDS or Public Distribution System. Under this cash transfer scheme, people living below the poverty line who did not receive or did not want certain items from their rations under the Antyodaya Anna Yojana could take cash instead. Several people were given confirmation certificates for the same benefit during the function held at Agartala's Rabindra Satabarshiki Bhavan. The Chief Minister took the occasion to urge the central government to reduce inflation, while the beneficiaries said that they found the cash transfer scheme beneficial. আমরা গরিবের লাগে অনেক উপকার হয়েছে এই উপকারটা আমরা যদি দোকানে আরো আগে দিত তাহলে আরো উপকার হইলে আচ্ছা হয়তো অনেক ধরেন না আমার ছেলে আছে একটা যে 100 মাস উপরে 10 মাস পরে আমি টাকাটা তুলি আমার যে কোনো একটা আমি কাজে লাগাতে পারি বা ছেলের একটা অসুখ হয়েছে আমার ব্যাংকে জানা আছে টাকাটা ঢুকবো আমি এই টাকাটা ঢুকে আমি কাজ করতে পারি বা নিজেরও একটা অসুখ হয়েছে কাজ করতে পারি বা আমি যে কোনো একটা সংসারের মধ্যে একটা কিছু মানে আবেদন কিনতে গেলেও আমার ভরসা আছে এই টাকাটা আমি পেয়ে গেছি সরকার করতে